CB2LL, Consciousness Bites to Live Light, yet another episode, 9:30 p.m. Well, I'm early today for a change, and how does it end this? And 9:30 every Sunday that we meet here, and I look forward to meet you all, just to see, just to connect with you, just to know what you would like to hear from me. So keep pouring in what you would like to hear from me. Yet today I do not have a topic. I do not have any specified, topic that I can speak on. But yes, let me just introduce where I am today. I am in the bar room of my resort in Sikkim. Let me just give you a look of that. This is the only quiet, peaceful place where I could make the video. And it's freezing cold. So I could not step out. And I said, let me make the most of this room. So, just pulling in a lot of energy. Not really feeling tipsy because I'm not pulling the energy from the alcohol. Yet I am loving this high on consciousness. So what am I going to talk about? Well, have you heard of something like jack of all and master of none? That's what happens in most people's life when they try to do everything. They try their hand at everything, yet they might master some and they might not be able to master a few of them. So this happened when I came across, like where I am in Sikkim, the chef here has got a potency, has got his skill with certain kind of cuisine. But what happens in most of the hotels is, hotels expect their chef to be multi-cuisine skilled. And that might be possible in some cases, but not in all the cases. So if you ask your chef, a chef who is good at, say, a Chinese, Asian kind of a cuisine, and if usko aap bolo, भैया तुम South Indian बनाओ, तो वो कैसा उत्तपा बनाएगा और कैसा डोसा बनाएगा. That's exactly what happened when we had a South Indian cooked by the chef who is good, phenomenal at Pan-Asian cooking, different, the Chinese, the, Indonesian, Balinese, Burmese, all of those kind of cuisines. But he did not do well in the South Indian cuisine. He just botched up the entire thing. So then it was very important for me to give the feedback to the, to the management. Listen, don't try your chef at everything. Probably have a different chef for South Indian, for North Indian, and for other cuisines. This same thing applies in our life. You may try your hand at different things, but there would be about 5 to 10 things, or rather little more or less, where you will just outperform, where you will just outcreate. You will outcreate yourself from what you were previous day, from what you were in the past. You will just go on shining because that's your strength. So we all know when we apply for jobs, when you apply for any recruitment, there is something called a SWOT analysis, right? SWOT analysis is all about knowing your strengths and knowing your weaknesses. So when you know your weaknesses along with your strength, you know which one can enhance further, which can be enhanced further, and the others where you don't have to really put in that much of energy. You might put in that much of energy, but you tend to fail. You might just keep it at the back burner. Not put so much energy and failing, putting energy and failing, and rather kind of, ignoring where your strength is. So guys, apply your strength where you are bound to shine. Rather, outshine, outperform, outcreate yourself. You know why that happens? It happens because that's where your heart lies. When you engage with that activity, where you perform well, notice how involved you are, how energetically connected you are, and that is called the communion, total amalgamation, and rather when two energies become one, that becomes your perfect alchemy. So when that perfect alchemy, anything that you create will turn out, guess what? Gold. So to yield gold, to create gold, to outshine yourself, put your energy, put your focus, put your attention, place your intention on something
दैट इज योर स्ट्रेंथ, जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है और आपको बहुत अच्छा, थोड़ी सी मेहनत से वो आपकी स्ट्रेंथ है। वहाँ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन, अपना फोकस चैनलाइज करिए। एक वो चीज़ है जिस पे आप कोशिश कर रहे हैं और एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, नहीं, आप पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पास होंगे, बट द थिंग इज एक बार जब फेल हो रहे हैं, फिर एनर्जी पुल डाउन हो रही है, फिर दूसरी बार थोड़ा बेटर हुआ बट फिर भी आउटशाइन नहीं हुआ, फिर एनर्जी पुल हो रही है। सो एनर्जी पुल हो रही है, कोशिश कर लीजिए बट डिसअपॉइंट मत होइए। अपनी एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में, आप जानते हैं कि वहां पे आप 0.1% का एफर्ट डालेंगे, स्ट्रेंथ डालेंगे और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सो जहां पे 1% एफर्ट डालने से 100% रिजल्ट मिलने वाला है, अपनी एनर्जी चैनलाइज करिए, ना कि जहां पे आप 200% एफर्ट डाल रहे हैं और 0.00000% आपका रिजल्ट निकल रहा है। ओके, सो यस, वी नो, कीप ट्राइंग, कीप परसिस्टिंग, कीप परसिवियरिंग, perseverance pays, yes it does, but then it is a choice। जहाँ पे 1 का 100 हो रहा है और बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत कम एनर्जी लग रही है, बहुत कम एफर्ट लग रहा है, आप अपनी एनर्जी वहाँ डालना चाहते हैं, या जहाँ पे आप अपनी 200-500% एनर्जी डाल रहे हैं पर उसका बहुत कम आपको यील्ड हो रहा है, उसका रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, इट्स कंप्लीटली अ चॉइस। एंड सम पीपल एक्चुअली गो ऑन प्रूविंग देयर पॉइंट in the direction where they are focusing their energy, channelizing their energy in the direction where they are failing over and over again. You know why? वहाँ पे थोड़ा एक ईगो मैटर आ जाता है, ये तो मैं करके रहूँगा, ये तो मैं करके रहूँगी। वेल, गुड फॉर यू, बट देन आप अपने आप को भी देखिए कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अगर आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज अगर ये इस जगह जहाँ आप अपनी एनर्जी का आउटपुट उतना नहीं है, जहां आप एनर्जी डालने से, थोड़ी सी एनर्जी डालने से ग्रैंड आउटपुट मिलने वाला है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, इट मे बी एनीथिंग, आउटपुट मे बी एनीथिंग। अपनी एनर्जी वहां डाल, आपके मोटिवेशन को, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपको अपलिफ्ट करेगा और डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एनर्जी किस डायरेक्शन में चैनलाइज हो। जैसे मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चली कि फाइन, my strength is with my capacity, my ability to speak, to talk, to talk publicly, and that's exactly where I started putting my energy, my attention, my focus, and then it began to grow. That's exactly where I am. I am probably not good at technology or with gadgets so much. I am not really good with digital media. So I do not put my energy so much there. Rather, I outsource it. I have somebody who is way better than me. I will employ that person. I will incorporate that person's skill set. I will use that person's skill set because सबसे पहले ये एक्नॉलेज कर, किसी एक चीज में जिसमें आप अच्छे नहीं हैं और कोई और आपसे बहुत अच्छा, उसको शामिल कर लो, उसको इंक्लूड कर लो, उसकी एनर्जीज को इंक्लूड कर लो और ये पहचानो, ये जानो कि वो आपसे बहुत अच्छा है उस चीज में, और इससे आप अपने आप को थकाएंगे नहीं, आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे और उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। ओके, सो आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या स्ट्रेंथ नहीं है वो जानिए। जब आपकी स्ट्रेंथ क्या नहीं है और उसमें आप अपनी एनर्जी और फोकस और अटेंशन डालना कम कर देंगे या किसी और को बाहर से लेकर आएंगे जो आपसे बहुत एफिशिएंट है उस पर्टिकुलर चीज में, आपको रिजल्ट भी उससे कहीं ज्यादा 4 गुना मिलेगा जो आपने सोचा है। सो प्लीज एक्नॉलेज योर कैपेसिटीज, योर स्ट्रेंथ्स, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक्नॉलेज बी योर वीकनेसेस एज वेल, बिकॉज वेयर यू आर वीक, somebody else has got the strength, somebody else is strong. So pulling the energy of that strong person or thing or whatever it is and include it. So when you and that strength become one, output is greater, right? So अपने आप को सही साबित करना बंद करिए, अपने आप को राइट प्रूव करना बंद करिए। नहीं मैं होंगी, वेल अच्छा है, जब तक हो रहा है कर लो, बट अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। 1-2 एफर्ट दो, अटेम्प्ट करो, मल्टीपल अटेम्प्ट करो, पर लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी,
ये इंसान जो दूसरा है ये मेरे से बहुत अच्छा है, मैं उसकी एनर्जी लेकर आता हूँ और आती हूँ, और फिर देखते हैं क्या क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम गोना पार्ट एंड गुड नाइट, स्लीप वेल, शब्बा खैर, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट संडे 9:30 PM CB2LL कॉन्शियसनेस बाइट्स टू लिव।